losses impact, or rather gravely impact, farmer incomes and livelihoods. And therefore, reducing these produce losses is obviously very critical to the agricultural productivity and improving incomes in agriculture. But the thing is, good post-harvest practices and an integrated cold chain, they not only reduce food loss, but they also enable producers to move up the value chain and target premium markets in India and abroad. And AAA's cold chain program, in fact, promotes sustainable climate-friendly cold chain development for reducing food loss, of course, for ensuring food security and improving farmer incomes, while also creating a low carbon and energy efficient and climate resilient cold chain infrastructure. In fact, from our meetings with farmer producer companies, as well as other stakeholders such as resource institutions supporting agriculture and financial institutions, one need that kept coming up and was highlighted in all our meetings was the need for access to affordable financing for cold chain specifically. And I would like to add that a key point to consider when financing cold chain is how to ensure that we finance energy efficient and sustainable and climate friendly cold chain, not just any technology for cold chain. And how can we draw lessons from other agricultural schemes which do in fact finance climate friendly technologies, such as the PM Kusum scheme, which provides support for solar irrigation pumps. To discuss all this, we are glad to have knowledgeable professionals in our webinar today to speak on financing schemes offered by their respective organizations. We have Mr. Anjenay Kumar from the Department of Horticulture, Bihar, who will speak on schemes for agriculture cold chain development from the Department of Horticulture. We will have a brief Q&A session after his presentation. Following that, we have presentations on financing schemes from Dr. D Nayak, who's the Deputy General Manager of NABARD in Bihar's regional office. Another presentation from Mr. Kameshwara Rao of HDFC Bank. And finally, a presentation from Mr. Rohit Dhanda, who's Assistant Vice President of Capital Markets and Strategic Initiatives at Samunnati Finance. We will have a brief Q&A session after their presentations as well. I now invite Mr. Anjenay from the Department of Horticulture, Bihar, to speak about schemes for agriculture cold chain by his department. Welcome, Mr. Kumar. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting us in this one of the most important webinar today on financing cold chain for agriculture. And the deputy director, Mr. Rakesh Kumar, was invited in the particular webinar, but due to some urgent pre-required meetings, he unable to join this webinar. So I am actually joining this webinar on behalf of Department of Horticulture, Directorate of Horticulture, Government of Bihar. So in this, I just like to know what type of the audience are here, because I have developed my PPT based on the I thought that the few member from the FPC and the resource institution are also there, so that the PPT will also helpful for them also. So is there any farmers and the representative from the FPC are also there in the particular webinar? Yes, sir. There are audience from farmer producer company and from different producer group as well. And there are individual farmers also who have joined the webinar. ओके थैंक्स. सो एक्चुअली मैंने जो पीपीटी डेवलप किया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं वो लोग भी बेनिफिटेड हों, साथ में जो उनको जो एफपीसी के जो प्रमोशनल जो एनजीओज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर रिसोर्स इंस्टीट्यूट हैं उनको भी वो बेनिफिट हो सके, तो अकॉर्डिंगली मैंने इस पीपीटी को एक डेवलप किया है. तो मैं शेयर करूंगा एक पीपीटी अकॉर्डिंगली. मैं श्योर सर. Is it visible? Yes. Yes, sir. So yeah, so myself Anjenay Kumar, मैं यहाँ पर उद्यान निदेशालय में एज ए कंसल्टेंट हूँ, और हम लोग उद्यान निदेशालय की जो सारी योजनाएं चल रही है उस चीज को एक्चुअली हम लोग डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट को सपोर्ट करते हैं, और बेसिकली मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर इंडिया लिमिटेड से हूँ. सो आज का जो वेबिनार है जो फाइनेंसिंग कोल्ड चेन फॉर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कीम एंड बैंक लोन. सो
मैं यहाँ पर अभी उद्यान निदेशालय में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिसमें फार्मर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं आकर के इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोच करते हैं, उस पार्टिकुलर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट है उसको मैं बेसिकली यहाँ सपोर्ट करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जस्ट एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि व्हाट इज कोल्ड चेन। सो कोल्ड चेन एक्चुअली क्या है कि ये why it is important. So it is important for the two aspects. One is the preserving quality of the agriculture produce, and it also enhance the life cycle of the agriculture produce. So cold chain is not a one-time activity. It's the during the value chain from harvesting, routing, packaging, cooling, staging, transportation, storage, distribution. Whole agriculture value chain cold chain is required, and each and every node, the if you cold chain aspect is missing, the of course agriculture produce will lose this shelf life and of course quality. So the one of the cold chain is one of the really important aspects for the making the for providing the agriculture quality and for providing agriculture good quality, and of course the ensuring the quality and the increasing the life cycle of the agriculture produce. So it's during the whole value chain is really important. And after that, so वो एक जो हम लोग की समझने की जरूरत है कि कोल्ड चेन क्यों जरूरत है हम लोगों को। यदि बिहार के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं तो बिहार देश में सब्जी के उत्पादन में 5वां सबसे बड़ा राज्य है, उसी तरह से फलों के उत्पादन में 8वां बड़ा राज्य है। और मैंने एक पिक्चोरियल डिपिक्शन में दिखाने की कोशिश किया है कि कैसे लीची में हम लोग पूरे इंडिया का 40% प्रोडक्शन 42% लीची प्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग मशरूम में 28,000 मैट्रिक टन ईयरली प्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग टॉप नंबर पे हैं। सिमिलरली मखाना में हम लोग का होल इंडिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में 90% बिहार का कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली गुआवा, पोटैटो, हनी, मैंगो और केला में यदि हम लोग देखें तो लॉर्ड हम लोग बहुत ही मतलब प्रोमिसिंग हम लोग का मतलब पोजिशन है बिहार का। सो डेफिनेटली ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फ्रॉम हार्वेस्ट से लेकर के फाइनल कंज्यूमर के प्लेट तक जाता है, तो होल वैल्यू चेन में कोल्ड चेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So here we can say that of course the Directorate of Horticulture is implementing the MIDH scheme, and we are extensively providing wonderful support to the all investor and farmers. So यदि कोल्ड चेन की हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे मैंने पहले ही बताया कि हार्वेस्ट से लेकर के जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है फार्मर्स और कंज्यूमर के प्लेट में जाता है, तो होल जो चेन है वैल्यू चेन है, प्री कंडीशन, प्रिपरेशन से ट्रैकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, होल वैल्यू चेन के एस्पेक्ट्स में कोल्ड चेन इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स MIDH गाइडलाइन भी हर एक वैल्यू चेन के नोड पर कोल्ड चेन कैसे बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रख सकता है, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को स्कीम को इम्प्लीमेंट को ऑफ कोर्स उन्होंने इस तरह का प्रोविजन किया है। तो उन्होंने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MIDH का गाइडलाइन देखा जाए तो उन्होंने सेम गाइडलाइन हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंप्लीमेंट करती है। तो यदि देखा जाए तो इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो गया, हम लोग का प्री कूलिंग यूनिट हो गया, कोल्ड रूम स्टेजिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज डिफरेंट टाइप के कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 टाइप 2, उसी तरह से मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, रेफर कंटेनर्स जो हैं फ्रॉम वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाने के लिए वो भी कोल्ड चेन से रिलेटेड होनी चाहिए। AC retail shelf and ripening chamber, all these aspects are comes under the cold chain initiative. और हम लोग ने यदि बिहार का हम लोग ने देखा जाए, हम लोग का बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल इसमें अपनाया है। और हर एक जैसे MIDH के गाइडलाइन के अनुसार जो सब्सिडी प्रोविजन है इन सारे जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 35% है, बट हम लोगों ने बिहार गवर्नमेंट ने 15% का एक्स्ट्रा उसमें सब्सिडी दिया है, और टॉप अप करके टोटल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर और जो फार्मर्स हैं वो 50% की सब्सिडी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रोमिसिंग एस्पेक्ट है यदि कोई इन्वेस्टर या बिहार का इन्वेस्टर या फार्मर्स यदि बिहार में इस तरह का यूनिट लगाना चाहता है। तो जैसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, यदि इंडिविजुअल फार्मर्स यदि इस पार्टिकुलर कंपोनेंट को लगाना चाहता है तो 50 लाख का गवर्नमेंट का कॉस्ट है, उसमें हम लोग 50% की सब्सिडी देते हैं। और सेम इन केस ऑफ FPC, यदि FPC है, कोई बहुत सारे FPC हम लोगों के पास अप्रोच करते हैं, उनको हम लोग 75% की सब्सिडी देते हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि प्री कूलिंग यूनिट है जो एग्जैक्टली जो फार्म हीट को रिमूव करता है पोस्ट सब्सिक्वेंट शिपिंग के पहले, तो
उस तरह के प्रोजेक्ट में 25 लाख का गवर्नमेंट का प्रोविजन है, सब मतलब कॉस्ट का प्रोविजन है जो 6 मेट्रिक टन का होना चाहिए। उसमें हम लोग 50% की सब्सिडी देते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, और जो एफपीसी हैं एफपीओ हैं उनको 75% की सब्सिडी दे रहे हैं। उसी तरह से कोल्ड रूम स्टेजिंग है, वो 15 लाख का प्रोजेक्ट है और 30 मेट्रिक टन का होना चाहिए, उसमें भी हम लोग 50% और 75% की सब्सिडी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कोल्ड स्टोरेज, जो बिगर कोल्ड स्टोरेज होते हैं, टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज और टाइप 2 कोल्ड स्टोरेज, मैं थोड़ा क्लियर यहाँ कर देना चाहता हूँ। जो वैसे जो फार्मर एफपीसी के जो मेंबर हैं, जो थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, तो मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 जो है वो सिंगल कमोडिटी रखने के लिए जनरली यूज होता है। जैसे मैं बिहार की बात करूं तो जो पोटैटो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पोटैटो को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के सिंगल कमोडिटी बेस्ड कोल्ड स्टोरेज डेवलप किए गए हैं। तो वहां पर यूनिट पर मेट्रिक टन का कॉस्ट हम लोग 8,000 रखा हुआ है एमआईडीएच का। और वैसे वैसे कोल्ड स्टोरेज जहाँ मल्टी कमोडिटी रखा जा सकता है, मान लीजिए वहां पर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो हैं, अदर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, उन सारे रखने के लिए मल्टी कमोडिटी जो कोल्ड स्टोरेज होती है वो कोल्ड स्टोरेज टाइप 2 होती है। उस पे 10,000 की सब्सिडी का 10,000 पर मेट्रिक टन का मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और हम लोग 50% और 75% की सब्सिडी उस पे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, modernization and expansion of cold storage, not only the new cold, we are providing subsidy for the new cold storage, but also the existing cold. If any owner and investor want to expand the existing capacity of the cold storage, so also we are providing subsidy for them also. So here nowadays we have seen that lots of investors are coming and approaching for the alternate technology. They want to use the solar plate for use for the getting for the renewable energy sources. So of course there is a provision for the, we are also providing that subsidy for the installation of the solar plates for the cold storage. So that aspects we are also quite matlab going towards the net zero to going towards net zero also, net zero carbon also. So we are providing subsidy for that also. Apart from that, from the one place to other place, if any investor and farmers are want to use the refer container, so of course the project cost is 26 lakh as per the MIDH guideline, and we are giving 50% subsidy. So one for the investor actually, an FPC and FPO member, I want to just tell that for the, if they are purchasing the FR container less than 9 metric ton, so of course that the cost will be based on the pro rata basis, but the refer container size should not be less than 4 metric ton. So that important aspect need to keep in mind. And apart from that, for selling the horticulture produce, we are also providing the subsidy on the AC retail sales. There is as per the MIDA guideline, the project cost is 15 lakhs, and we are providing 50% subsidy for the individual investor and 75% subsidy for the FPC and FPO member. Simultaneously, the ripening chamber is also getting more attraction in Bihar. Nowadays, lots of investors are actually coming and approaching for the installation of the ripening chamber, and we have given lots of we have given subsidy to the so many the investor and farmers. So there is a project cost is, we had decided that 1 lakh per metric ton is the project cost, and based on that we provide the subsidy. Suppose any investor want to establish a ripening chamber of 50 lakh capacity, 50 metric ton. So of course the project cost will be the 50 lakh, and accordingly we'll provide 50% subsidy for the individual investor, and FPC and for the FPC and FPO subsidy the 75%. And as I told you that of course we are also providing subsidy for the modernization and induction of the cold chain. So various components are there, and this is the actually the long lists are there, and we are providing subsidy on each and every aspect. So here we can say that there is subsidy on 50 on few component, there is subsidy on 35% and 55%. But yes, Bihar government had taken proactive role, and we are providing 50% subsidy to the individual investor, and for the FPC, the subsidy is 75% for all the technology induction for the cold chain, and as well as the modernization of cold chain. And
And of course, the topic is on the financing the cold chain for the agriculture, government scheme and bank loan. So I just like to say that all ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी 5 लाख या उससे ज्यादा जो कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे बैंक लोन लेना कंपल्सरी है. So of course this scheme is actually the credit link back indexed subsidy. Means farmers को पहले बैंक से आप लोन लेना होगा. बैंक 5, यदि उनका प्रोजेक्ट 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो पहले उनको बैंक से लोन लेना होगा. बैंक से लोन लेकर के अपना कंट्रीब्यूशन लगा करके पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाना होगा. और पोस्ट सिविल कंस्ट्रक्शन और मशीनरी का इंस्टॉलेशन हो जाता है, फिर हम लोग सब्सिडी अमाउंट रिलीज करते हैं. तो ये सारा पहले हम लोग जनरली इन्वेस्टर को ये रहता है कि मान लीजिए 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख वो सोचते हैं कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा और 10 लाख सब्सिडी मिल जाएगी तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यानी क्रेडिट लिंक बैक इन सब्सिडी का मतलब यही होता है कि पहले उनका बैंक से लोन लेना कंपल्सरी है. बैंक से लोन ले लेंगे, फिर अपना ओन कंट्रीब्यूशन के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा. वंस प्रोजेक्ट गेट स्टार्टेड, वंस द सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी आर इन प्लेस, we do the joint inspection of the particular site, and based on the recommendation of the joint inspection we release the subsidy amount. So these are the ये aspects को हमेशा जो इन्वेस्टर हैं और जो एफपीसी के मेंबर हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, ये पार्टिकुलर एस्पेक्ट. एक और बहुत क्रिटिकल इसमें एस्पेक्ट आता है, ये है कि कितना लोन लेना है. मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 20 लाख का प्रोजेक्ट है और फार्मर चाहता है कि ऑफ कोर्स बैंक से लोन लेना है, क्यों नहीं मैं 5 लाख का लोन ले लूं. तो उसमें भी बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ये आता है कि यदि 20 लाख का प्रोजेक्ट है और उनको 50% की हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं तो 10 लाख सब्सिडी हम लोग देंगे, तो उनको बैंक से लोन कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा का लेना होगा. ये हमेशा एक ध्यान रखने की बात होनी चाहिए. मतलब हर एक लोगों को, जो भी इन्वेस्टर हैं, फार्मर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए. बहुत सारे हम लोग जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो यहाँ पे करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आती है बाद में कि कैसे करना है, कितना लोन लिया जाए. बाद में वो कम लोन अप्लाई करके मेरे पास आते हैं, फिर वो सब्सिडी ज्यादा मांगते हैं, तो वो इश्यू एक निकल करके आता है. तो हम लोग ये हमेशा इसको, मतलब जो भी इन्वेस्टर हैं उनको हम ये बताते हैं कि आप जितना सब्सिडी अमाउंट अवेल करना चाहते हैं प्रोविजन के अनुसार, उतना अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट आप बैंक से लोन लीजिए. तो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बिहार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, सॉरी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इंटरेस्ट सब्सिडी देता है इस तरह के यूनिट्स पर. मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो प्लांट और मशीनरी का जो कॉस्ट आता है, मान लीजिए 50 लाख का कॉस्ट है प्लांट मशीनरी का, तो उसका 30% हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं. मान लीजिए कि प्रोजेक्ट है 50 लाख का, उसका 30% 15 लाख हुआ, ठीक है. और इंटरेस्ट उनका, मान लीजिए वो बैंक से लोन लिए कुछ अमाउंट और इंटरेस्ट उनका 18 लाख हुआ, तो उनको हम लोग सब्सिडी ये 30 लाख 15 लाख तक का सब्सिडी देंगे, हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे. ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है. यहाँ पर यदि कोई इन्वेस्टर बिहार का इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए अप्रोच कर सकता है. ये पार्टिकुलर एस्पेक्ट पर भी ध्यान देने की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके थ्रू भी हम लोग ऑफ कोर्स 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविजन है. जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको इंटीग्रेटेड पैक हाउस, रीकूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 टाइप 2, राइपनिंग चैम्बर, इस तरह के सारे यूनिट्स हैं, उन पे भी 3% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू 3% सब्सिडी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविजन है एआईएफ स्कीम के थ्रू. तो इस पार्टिकुलर स्कीम को भी फार्मर्स अवेल कर सकता है. तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है. और जो भी इन्वेस्टर है, मैं जो भी इन्वेस्टर हम लोगों के पास अप्रोच करता है, तो उनको ये सारे, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ये पार्टिकुलर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो वो जो बहुत ही इंटरेस्ट सब्सिडी वाला अमाउंट है वो लूज कर देते हैं. साइमल्टेनियसली क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर या फार्मर्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंड है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये वाला जो सब्सिडी प्रोविजन, जो इंटरेस्ट सबवेंशन का सब्सिडी प्रोविजन है, उसको ये लूज कर देते हैं. तो ये भी हम लोगों को इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए यदि बिहार में वो इन्वेस्ट करना चाहता है. और ये मैं एक और थोड़ा बताना चाहता हूँ, इस पर और फर्दर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यदि
बहुत सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह के लोग EIF के स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल एरिया आप देखा जाए इस टाइप के, मतलब फार्मर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, कोऑपरेटिव हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव, SHG हैं, बहुत SHG के फेडरेशन है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो मतलब मैं अब ये बताना चाहूँ कि लॉट्स ऑफ बहुत सारे तरह के जो स्टार्टअप्स भी हैं, फार्मर्स को अवेल कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से FPC, FPO, APMC मार्केट कमिटी यदि इस तरह का प्रोजेक्ट लेना चाहती है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट लेना चाहती है तो AIF के थ्रू उनको इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविजन है, तो वो ये ले सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर है, या तो वो फार्मर्स होकर के आता है, या फिर वो स्टार्टअप के रूप में आते हैं, या फिर कोऑपरेटिव के थ्रू आते हैं, तो वो उनको हम लोग ये जरूर ये करते हैं कि आप AIF के जो जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी आप समझिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप बैंक रिप्रेजेंटेटिव से उस संदर्भ में भी आप बात कर सकें। और ये मैं थोड़ा बिहार का केस यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ, कि हम लोगों ने बहुत सारे जो ऐसे बताया कि हम लोग MIDH का जो प्रोजेक्ट्स है उसको डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैंने जो रिसेंटली हम लोगों ने जो कोल्ड चेन्स के कंपोनेंट को हम लोगों ने फाइनेंस किया है, हम लोगों ने फंड किया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, उसका एक फोटोग्राफ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। रेफर वैन को हम लोगों ने नालंदा में अभी हम लोगों ने एक इन्वेस्टर को दिया है। कोल्ड रूम स्टेजिंग दिया है। मल्टी कोल्ड स्टोरेज हम लोगों ने अभी बेटा पटना में दिया है। राइपनिंग चैम्बर हम लोगों ने मल्टीपल लोकेशंस में प्रोवाइड किए हैं, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, इसी तरह से बहुत सारे जगह पर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग फार्मर्स आकर के राइपनिंग चैम्बर के लिए हम लोग लेते हैं। तो एक हम लोगों ने मैंने जस्ट एक ब्रीफ स्नैपशॉट अब बताने की कोशिश की है कि इस तरह के एक्टिविटीज हम लोग दे रहे हैं, और प्रोएक्टिवली हम लोग फार्मर्स को हमेशा ये करते हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आकर के इन्वॉल्व हों। और ऑफकोर्स हम लोग का सब्सिडी प्रोविजन जो है, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए। थैंक्स, बस आज के लिए इतना ही। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। Yeah, thank you, sir. Thank you so much for briefing us about all the kind of subsidies which Department of Government is providing for development of cold chain infrastructure. So we have a couple of people who want to ask questions. So first of all, I would like to unmute Mr. Abhay Nagle. He has some questions. So Bhairav sir, can you unmute him? Yeah. Yeah, Okay, thank you Mr. very Rajan. much for a wonderful Yeah, please. presentation. Can I ask my question? Yeah, sure. Sure. Yeah, sir, this thing, how much promoters capital is required for the project? Suppose if the total cost is say 100 lakhs or maybe 25 lakhs, what should be the minimum promoters capital? सर एक्चुअली मैं यदि FPC के हिसाब से यदि मैं बात करना चाहूँ, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है। FPC यदि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को अवेल करना चाहती है, तो यदि बैंक उस पार्टिकुलर FPC को यदि फंड कर दे रहा है, तो आई एम ओके विद दैट। सो हम लोगों ने ये नहीं रखा है कि प्रोमोटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेस्ड ऑन यदि बैंक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, तो हम लोग ओके हैं कि वो FPC फंक्शनल है, और हम लोग उनको प्रोजेक्ट्स के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा है, पार्टिकुलरली बिहार में जो इस तरह के इन्वेस्टर आते हैं। That's really very good, क्योंकि मतलब जीरो promoters contribution पे भी आप सब्सिडी और लोन लेके आदमी ये एस्टेब्लिश कर सकता है। यस, Indeed, I appreciate. यदि banks are okay, we are ready to give subsidy. My second question is on the items of cost. You finance on land, building, machinery, everything, or is it only restricted to machinery and all? या डेफिनेटली ये हम लोग का प्रोजेक्ट जो है, जो MIDH का जनरल गाइडलाइन है, ये क्या है कि फिक्स कॉस्ट पे ही होता है। सिविल कॉस्ट और जो प्लांट एंड मशीनरी का ही जो सब्सिडी जो कॉस्ट आती है, उसी के आधार पे हम लोग सब्सिडी निकाल करके आते हैं। जो वर्किंग कैपिटल्स जो होते हैं उस पे हम लोग सब्सिडी, उसको प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। जो फिक्स कॉस्ट है उस पर ही हम लोग सब्सिडी का ये रखते हैं। मान लीजिए कोई राइपनिंग चैम्बर है, राइपनिंग चैम्बर लैंड पर भी हम लोग सब नहीं देते हैं। मान लीजिए राइपनिंग चैम्बर कोई एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, और उसका वर्किंग कैपिटल है 15 लाख और फिक्स कॉस्ट है 50 लाख, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना मैट्रिक टन है, हम लोग 50 लाख को ही कंसीडर करके हम लोग प्रोजेक्ट्स को आगे ये करते हैं। Okay, that's also great. मेरा ये है, do you give for retrofitting, like say changeover of the gas from R22 to maybe something like? यस, यदि आप
यस, यदि MIDS का गाइडलाइंस देखेंगे तो बहुत सारे जगह पर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज के कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग बिहार गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती है। बट यस, अब मैं इस पे थोड़ा एक और अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स फार्मर्स बहुत ही कम इस तरह के इन्वेस्टर आए हैं मेरे पास कि हम लोग एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए मुझे मतलब पार्टिकुलर सब्सिडी लेनी है, क्योंकि उनको अभी जानकारी नहीं है। रिस्पेक्टिव कि हम लोग का बहुत हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में हम लोग आगे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फार्मर और इन्वेस्टर्स को इस तरह की जानकारी, प्रोजेक्ट्स के बारे जानकारी नहीं है, सब्सिडी की जानकारी नहीं है। तो डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो फोरम आ रहे हैं उस पार्टिकुलर फोरम के थ्रू जो बिहार के यदि इन्वेस्टर या FPC जुड़े हुए हैं वो इस तरह की जानकारी लें और उनको जानकारी मिले और इन्वेस्ट करें। Oh, that's great. My last question. I'm sorry. My last question is. Okay. Yeah. I would request you. It's not a question. It's more of a suggestion that if you restrict the disbursement inspection to same as bank inspection, then it will be easier for this thing. Because the bank is doing inspection, giving the funds, and then again your agency is coming. They are also inspecting for disbursement and giving the funds. So my earnest request will be to make these two inspections common, so that the farmer or the entrepreneur is a better place. This is just a suggestion, but a wonderful scheme you have. I really appreciate. Yeah, sir, really thanks for your word. Actually, sir, ये जो हम लोगों ने प्रोविजन रखा है जो FPC के केस में हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स रखा है, क्योंकि हम लोग भी बिहार गवर्नमेंट भी चाह रही है कि FPC को हम लोग और प्रमोट करें और वो मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग वाले मतलब अपने साइकिल में वो इंटर करें। सो इसलिए हम लोगों ने कोल्ड चेन पर FPC को काफी रिलैक्स देने की कोशिश की है। ये हम लोगों का प्रोविजन है और डेफिनेटली हम लोगों का अब नाउ इट इज लास्ट 6 month 4 to 5 more number of applications are coming from the FPC and FPs. Thank you, sir. Thank you very much. I just request for a copy of the presentation for my records. Sure. Definitely, I will send the organizing team, and they will send to the across the participants. Thanks again. Thank you, Mr. Abhay Nagle, for asking some of the very critical questions, which is also important for other audience to get an update on those things. So thank you so much for your contribution. Now I would request Bhairav sir to unmute Mr. Rizwan Ahmed from Shelco Foundation. He has question. So please unmute him. Yes, please go ahead. Yeah, Rizwan, please go ahead. You can unmute yourself. Yeah, thank you so much. Thanks, Anjenay sir, and thanks AAA team for organizing this. So basically, I would like to know, अगर जैसा बिहार में ऐसा चल रहा है, इधर do we have such things in Karnataka, Maharashtra region? That is one thing. And also, I could see in your presentation was 8,000 rupees per metric ton, and for 30 metric ton you have given 15 lakh rupees, something like that. So we in Shelco Foundation we have been installing cold storage of solar powered in Jharkhand, Odisha, Bihar. Also we are trying to touch Assam. So apart from like southern states we are doing there also, but then our capacity goes from 5, 10, 15, 20, 30 like that, and then the more you go, the higher you go, the per metric ton capacity reduces. Let us say for 10 metric ton, cost is somewhere around 15 lakh rupees. If you go with 20 metric ton, cost is somewhere around 28 lakh rupees. So it doesn't increase proportionally, but yeah, let us say 80 metric ton will cost you somewhere around 80 lakh rupees. So 1 lakh per metric ton will be like, if you reach 100, if you are somewhere near 10 and 20, 30, 1.5 lakh rupees per metric ton. So how this subsidy would work in that scenario in Bihar, if I try to implement in those districts, I mean those states? Yeah, first of all, I'd like to say that we are actually Bihar government is implementing the scheme the central government scheme, that the MIDH Mission for Integrated Development of Horticulture. That scheme is being implemented across the union territory and states. So of course, since you are from the Karnataka and any part of the country, you can avail this particular scheme. But yes, as you told that as per according to the MIDH guidelines, subsidy provision is 35%. But since Bihar government are taking proactive role, we are giving top up to 15%. So total subsidy is 50%. So that 15% subsidy may vary from one state to other state. So one aspect is that. And apart from that, or regarding the installation of the solar panel for the
for the alternate technology, of course, we are implementing the as per the guideline of the MIDH guidelines. We are not giving any other means apart from the top up subsidy, extra top up subsidy we are providing. We are not giving any other cost and all. So that's the thing. So 35% जैसे अभी अगर 10 मेट्रिक टन का कोल्ड रूम लगा रहे हैं, उसका कीमत अगर 16 लाख रुपीस है, उसमें मशीन कॉस्ट एक 9 लाख रुपए कुछ होता है, 5-6 लाख रुपए सोलर कॉस्ट है। ये जो MIDH अगर 35% देगी, वो 8-9 लाख रुपए पे देगी या 15 लाख रुपए पे देगी? सिंस इट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अगर मैं कर्नाटक में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो कोल्ड स्टोरेज के डेवलपमेंट के अलग स्कीम है और उसके अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के लिए अलग स्कीम है, तो दोनों के लिए ठीक है। तो ये हमेशा मान लीजिए बिहार में जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोल्ड स्टोरेज लगा चुके हैं, नाउ दे आर अप्रोचिंग फॉर द अल्टरनेट टेक्नोलॉजी। तो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के जो प्रोविजंस हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। जो 35% का 35 लाख का जो प्रोजेक्ट है अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो वाला स्कीम हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो एज ए मतलब इंटीग्रेटर अभी तक इस तरह के एप्लीकेशंस बिहार में मैं अपने जो एक्सपीरियंस से बताऊं किस तरह के नहीं आते हैं कि इनिशियल में ही दे वांट कोल्ड स्टोरेज अलोंग विद द अल्टरनेट टेक्नोलॉजी। ऐसा हम अपनी एप्लीकेशन हम लोग के पास नहीं है। Just sir, adding to Rizwan's question, so because उन्होंने कहा कि 16 lakhs मशीन का कॉस्ट है और 5 लाख सोलर का कॉस्ट है, सो देन इन दैट केस उसमें एक तरह से तो डबल सब्सिडी होगी ना कि 35% मशीनरी पे मिल जाएगा कोल्ड रूम के, और जो सोलर पैनल का सब्सिडी होगा वो अलग। सो ये आप क्लब कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊं कि प्लांट एंड मशीनरी एक मैं आपको बताऊं उसको हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स लेकर के चलते हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक बिहार में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं आए कि साइमल्टेनियसली दे वांट टू एस्टैब्लिश द कोल्ड स्टोरेज एज वेल एज दे आर सेम इन्वेस्टर वांट टू गेट सब्सिडी फॉर द इंस्टॉलिंग द सोलर अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल फॉर द अल्टरनेट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग एक्चुअली अभी जो आए हैं क्या है कि मतलब सेपरेट प्रोजेक्ट्स लेकर के हैं। पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए मेरे पास अप्रोच किए हैं और फिर बाद में विथ लेटर टाइम दे मींस उनको जब जानकारी हुई है स्कीम को लेकर के, तब फिर ये को सोलर पैनल अल्टरनेट टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरे पास प्रोजेक्ट आए। तो हम लोग एक्चुअली इनको 2 प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। तो ऑफ कोर्स प्लांट एंड मशीनरी के सोलर के जो आएंगे उसमें प्लांट एंड मशीनरी के जो कॉस्ट आएंगे उस पर हम लोग सब्सिडी देंगे अलग, और फिर जो कोल्ड स्टोरेज स्टैब्लिश हो रहा है उसके जो सिविल कॉस्ट हैं और प्लांट मशीनरी उसके हम लोग जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा उसके हम लोग 50% की सब्सिडी देंगे। इस वे में हम लोग उस प्रोजेक्ट को देखते हैं। थैंक यू सर, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोडल पॉइंट कौन रहेगा सर यहाँ पे कर्नाटका में ये करने के लिए? नोडल पॉइंट आप ऑफ कोर्स वहां पर जैसे यहाँ पर है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो बिहार में तो सिमिलरली यदि वहां पर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोई विंग होंगे या कोई डायरेक्टरेट होंगे जो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे बिहार में आपको बात करूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, तो आप वहां पर यदि महाराष्ट्र कर्नाटका के यदि आप रीजन से हैं तो वहां पे भी ऑफ कोर्स आपने डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर के जो ऑफिसेज हैं वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस हॉर्टिकल्चर ऑफिस कहाँ है और आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजन जी। Thank you, Rizwan, for asking some of the good questions for the audience. Just before unmuting others who are having question, I request that we have left only 8 minutes for Q&A session with Mr. Anjenay Kumar. So in case if anybody is left, we request you can mail us. We'll definitely discuss with Anjenay sir and we'll revert on your queries. So Bhairav sir, I request Pooja Kumari to unmute from SBI, I think she is. So please unmute her. Yeah, Yes, Pooja ji, please. you can go ahead. Hello, good morning, sir. Thank you for the nice presentation. Actually, my query have been already answered by sir. Basically, I wanted to ask, as sir said that 50%, if the investor wants to avail 50% of subsidy, then loan portion should be at least 50% or more than that, right? So my question was, in that portion and remaining 50% of the project cost, we used to take borrowers margin. So in that case, naturally the will go less than 50%. Then in that case, whatever the remaining amount the bank is giving loan, उतना ही उनको लोन मिले, उतनी ही सब्सिडी मिलेगी कि 50% of project cost मिलेगा सर? That is the query.
मैं फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर हैं, वो 20 लाख का प्रोजेक्ट कोल्ड चेन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और उस पे 50 लाख के प्रोजेक्ट पर यदि 50% की सब्सिडी है तो ऑफ कोर्स 10 लाख की सब्सिडी अवेल करेंगे। तो उस पार्टिकुलर इन्वेस्टर्स को बैंक से लोन कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट देना पड़ेगा। आप समझ रही हैं? और सर रेस्ट जो मान लीजिए कि वो ठीक है 20 लाख का प्रोजेक्ट है और 12 लाख का उन्होंने लोन ले लिया, तो 8 लाख उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू, वो पर्सनल कंट्रीब्यूशन 8 लाख हो गया प्लस 12 लाख उनका बैंक लोन हो गया, दोनों मिला करके वो सिविल कंस्ट्रक्शन और प्लांट मशीनरी को एस्टेब्लिश करेंगे। वंस द प्लांट मशीनरी और ये मशीनरी और सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग की ज्वाइंट इंस्पेक्शन जाती है, जो मोर और लेस सारे स्टेट में यदि कैन से कि मोर और लेस सेम अप्रोच वो लोग भी अपनाते होंगे। तो ज्वाइंट इंस्पेक्शन की जो टीम बनती है उसमें हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, फिर बैंक मैनेजर रहते हैं, साथ में जो बैंक ऑफकोर्स बैंक जो फाइनेंस करे उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, वो लोगों की टीम बनती है और उनकी विजिट होती है और बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन हम लोग सब्सिडी अमाउंट देते हैं। तो ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है कि ठीक है सर ओन कंट्रीब्यूशन और प्लस बैंक के कंट्रीब्यूशन के थ्रू आप एस्टेब्लिश करेंगे और फिर बाद में सब्सिडी आएगी। हाँ Hope it is your queries ठीक है बाद में having सब्सिडी आएगी तो उसमें नेचुरली कोई मोर देन 50% तो Yes. होगा ही होगा ही, yes. बैक एंडेड सब्सिडी है ओके Yes, yes. क्या आप पूछिए क्या रेफ्रिजरेटर वैन में भी सर सब्सिडी कंपोनेंट मिलेगा बोरोवर एलिजिबल रेफ्रिजरेटर वैन अगर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो हाँ डेफिनेटली एक्चुअली MIDH के अनुसार भी रेफ्रिजरेटेड वैन इटसेल्फ ए प्रोजेक्ट, वो 26 लाख का उनका गवर्नमेंट MIDH का गाइडलाइन है। ओके 9 सर मेट्रिक टन का कम से कम होना चाहिए और 9 ठीक है मेट्रिक टन का यदि है और 26 लाख का है तो हम लोग 50% की सब्सिडी हम लोग देते हैं और एज पर MIDH 35% की सब्सिडी प्रोविजन है। ओके थैंक यू सर एटलीस्ट 9 हाँ भैया ओके I think we can move. Okay, so now I request last question from Tafari Farmer Producer Company. Can you unmute Tafari Farmer Company, Bharat sir? Yes, done. Yeah, sir, please go ahead. I think Mr. Atul Awasthi is there from that organization. You can unmute Atul जी sir. नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, मैं कृष्ण अवस्थी बोल रहा हूँ। मलिहाबाद की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है टफारी फार्मर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या NHB की कोई स्पेसिफिकेशन है कि रेफ्रिजरेटर जो रेफर वैन है उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, या जो कोल्ड रूम है उसके पफ पैनल इतने होने चाहिए, और क्या ये भी है कि क्या NHB को कोई इम्पैनल्ड मैन्युफैक्चरर है जिससे ही हम ये कोल्ड रूम या रेफर वैन खरीदेंगे? पहला तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इंडिविजुअल 35% सब्सिडी अवेल प्रदान की जा रही है एक व्यक्ति को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए भी अगर 35% है तो आप अलग से क्या दे रहे हैं? इतना पहले इतना जवाब, फिर आगे और पूछेंगे। सर मैं जो आंसर दूंगा थोड़ा जेनरिक इसलिए देना चाहूंगा कि मतलब जो वेबिनार में बहुत सारे स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं और किसान जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग, जैसे मैं अपने स्टेट की में बात करूं, हम लोगों ने कोई भी कंपनी को इम्पैनल नहीं किया है इस पार्टिकुलर मशीन इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। और यदि आप देखा जाए बेस्ड अपॉन कि आप हम लोग और MIDH के गाइडलाइन के अनुसार ऑफ कोर्स जो भी मशीनरी इंस्टॉल होगा वो एज पर द ISI मार्क होना चाहिए, BIS स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, और सिविल कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्ट फ्रॉम, आप पार्टिकुलरली आपने पूछा कि वो पफ पैनल होगा, थिकनेस क्या होगा, तो जो आप बेस्ट मार्केट में यदि आप अप्रोच करेंगे, चूंकि आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप बहुत सारे जो इस तरह के जो मशीनरी सप्लायर हैं उनके साथ अप्रोच करेंगे और जो बेस्ट सूटेड होगा आपके बिजनेस के लिए वो आप अवेल करेंगे, तो वो वाला प्रोविजन है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ जो मैं बिहार में अपना जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जो भी आप यदि एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्टरेट में पार्टिकुलर कोल्ड चेन के लिए, तो जो आप एप्लीकेशन में जो पैरामीटर आप देते हैं कि मेरा जो मान लीजिए रैपनिंग चैम्बर का पफ पैनल 80 mm होना चाहिए,
तो ऑफ कोर्स वो पार्टिकुलर जो एस्पेक्ट्स है आपके साइट पर भी वो आना चाहिए। हम लोग के जॉइंट इंस्पेक्शन हो सकता है कि हम लोग की टीम उस पार्टिकुलर कंपोनेंट को जाकर के देखे कि क्या आपने सही से सही मशीनरी को एस्टेब्लिश किया है कि नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप एप्लीकेशन और जो डीपीआर में आप सबमिट कर रहे हैं पार्टिकुलर बिजनेस को अवेल करने के लिए, उसको फुलफिल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का वैसा कोई बहुत स्पेसिफिकेशन नहीं है। इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन अपने जो मशीनरी सप्लायर है उनके साथ बेस्ड ऑन क्या कंडीशंस होते हैं वो आपको विभिन्न वेरियस थिकनेस के वो आपको मशीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा सर जो मैं आपने क्वेश्चन पूछा एफपीसी वाला, तो मैं बिहार में आपको बताऊं कि जैसे एमआईडीएच का गाइडलाइन है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 35% है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट 15% की सब्सिडी दे रही है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, तो 50% की हो गया। साथ में एफपीसी को प्रमोट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग 75% की सब्सिडी दे रहे हैं कोल्ड चेन के लिए। तो ये ऑफ कोर्स ये हम लोग का एक एडेड एडवांटेज है यदि एनीवन वांट टू इन्वेस्ट इन बिहार इन कोल्ड चेन। सो होप कि योर क्वेरी हैज बीन सॉल्व्ड। उत्तर प्रदेश के लिए आपकी क्या योजना? आप वहाँ 75% दे रहे हैं बिहार में, यूपी में आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब? और दूसरा यह है कि हमारा एक और सवाल है, हमारे मलिहाबाद एरिया को मैंगो क्लस्टर के रूप में डेवलपमेंट करने का एक योजना है पीडा की, लेकिन आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं कि हमारा मैंगो क्लस्टर जो यहाँ पर ये डेवलप हो सके? रियली सॉरी, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं बिहार के रिप्रेजेंटेटिव में और डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जस्ट एज ए नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि एमआईडीएच का जो गाइडलाइन है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसका जो प्रोविजंस है वो सारे स्टेट में लागू हो रहा होगा। और स्टेट बट जो टॉप अप सब्सिडी है और जो स्टेट इनेबल्ड जो भी फैसिलिटी है वो वन स्टेट से डिफरेंट स्टेट में वेरी कर रहा होगा। तो आपको अपने रेस्पेक्टिव स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं आप उनसे बात करेंगे तो एग्जैक्टली आपको किस तरह के कोल्ड चेन में वो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। जी, क्या ये दुखद नहीं है कि यूपी का कोई हॉर्टिकल्चर से नहीं जुड़ा हुआ है? Yeah, Atul sir, thank you so much for asking some critical questions related to Uttar Pradesh. I think जो यहाँ पे अंजने सर कहना चाह रहे बिकॉज वो बिहार गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो उन पे फोकस्ड होके बता सकते हैं। बाकी वो थोड़ा बहुत गाइडलाइंस आपको दे सकते हैं कि यूपी में कैसे काम करना है। डेफिनेटली आप यूपी में काफ़ी क्लोजली ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। सो हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में भी हम डिपार्टमेंट में जब आपको बात करें तो हम आपको डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करें ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो पाए। अभी के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, Q&A सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू ओवर। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहूँगा अंजनेय सर को बिकॉज taking time on a very short notice for this webinar is a great support for all the people who are attending this webinar and was very knowledgeable. स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी निटी ग्रिटीज थी वो आपने यहाँ पे डिस्कस की। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सर कि मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, आप मुझे ये पीपीटी मेल करें। तो ऑडियंस से काफ़ी डिमांड आ रही है कि ये मेल उनसे शेयर हो पाए पीपीटी, तो अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो मैं उनसे शेयर कर पाऊंगा। यही एक रिक्वेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद पांडे जी। Thank you very much. So thank you so much, Anjenay sir. Now I would like to invite Mr. D Nayak. He is Deputy General Manager at NABARD. So can you unmute D Nayak sir, Bhairav sir? Okay, I think he has access. Yeah, we can see. Hi sir, good morning. Thank you so much for joining the session, sir. Please, you can start with your discussion points, sir. Thank you. Good morning, Prashant, and good morning, others. Anjenay ji, बहुत बढ़िया presentation था, very detailed था, and the discussion was also very lively. People are participating in the discussion. अच्छा लगा. And last को जो query हुआ था, that is also valid. Farmers and FPOs उनका पूरी तो है ही। MIDA से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना टॉप अप देते हैं और स्टेट में भारी करता है। नाबार्ड के बारे में मैं बोलूंगा, नाबार्ड स्कीम्स के बारे में शायद आई एम गिवन 10 to 15 मिनट्स टाइम। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले नाबार्ड क्या है। नाबार्ड अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री was created in 1982. हमारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है
refinance and institutional development. Institutional development में we are directly working for institutional development of cooperative banks and regional rural banks. And refinance है, पहले banks सब agriculture and allied activities and other priority sector lending में जो finance करेंगे, उसी के against banks NABARD से refinance ले सकता, financial support ले सकता है, and आगे उसको re-lend कर सकता है. Refinance की जरूरत इसलिए पड़ा कि often banks they say that we don't have adequate financial support for lending towards agriculture and allied activities. Agriculture and allied activities एक risky activity as compared to other business and industrial activity. What the banks do consider क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी तो situation में बहुत improvement हुआ है, लेकिन earlier इसमें मानसून खराब हो गया और कुछ थोड़ा बहुत रिस्क हो गया, हजार्ड हो गया है, देन लॉसेस होता है एंड बैंक्स का रीपेमेंट थोड़ा बहुत स्टिक में जाता है. इसीलिए उसको बैंक को नाबार्ड की तरफ से सपोर्ट दिया गया कि गो ऑन फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स एंड टेक फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड. जब भी एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सेटअप इंडिया में ऑलरेडी है, इसीलिए जब नाबार्ड को क्रिएट किया गया उस टाइम पे नाबार्ड को सिर्फ री फाइनेंस इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही रखा गया एंड डायरेक्ट लैंडिंग व्यवस्था नहीं दिया गया. अभी भी हमारे पास रेगुलरली वी आर गेटिंग कॉल्स. Am I audible? Is there any technical snag? Yes, sir, we can hear you. We can hear you. Okay. अभी भी हमारे पास रेगुलरली और डेली बेसिस पर बहुत सारे कॉल्स आ रहा है, सर नाबार्ड हमको कैसा लोन दे सकता है. मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, नाबार्ड डायरेक्टली इंडिविजुअल को लोन, कोई भी लोन नहीं देता है, ठीक है. लेकिन हाँ, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक उसी लोन के अगेंस्ट हमसे रिफाइनेंस सपोर्ट ले सकता है. तो ये क्या स्कीम है कोल्ड चेन के लिए, फार्मर्स और एफपीओस व अदर एंटिटीज के लिए. कभी कभी नाबार्ड एक स्पेशल फंड्स क्रिएट किया जाता है नाबार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड उसी फंड को हम लोगों के पास पहुंचाते हैं. एंड ऐसा एक स्कीम है फूड प्रोसेसिंग फंड. फूड प्रोसेसिंग फंड 2014-15 में क्रिएट किया गया नाबार्ड में. एक 2000 करोड़ का फंड, एक किटी दिया गया नाबार्ड को. नाबार्ड आरबीआई से बोरो करके वो बोरोवर को देता है. इसी के अंदर हम कोल्ड चेन एक्टिविटीज को फाइनेंस कर सकते हैं. वो एक एलिजिबल एक्टिविटी है. उसमें कोल्ड चेन में कोल्ड स्टोरेजेस, रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजर्स, दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसी को कर सकते हैं. लेकिन वो कैसे करेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग फंड, MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें ये फंड क्रिएट किया गया है. And they have designated around 313 food parks, various food parks, mega food parks, agriculture processing centers, and various industrial centers, various types of food parks. इसको create किया गया है. Around 313 food parks last 22 मार्च तक उसको डिक्लेयर किए हैं. उसी के अंदर और फूड पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उसी को नाबार्ड दे सकता है फाइनेंस. एक एक इसमें हु आर एलिजिबल हम देखते हैं, एक एक कंटेंट्स, ठीक है. प्रशांत जी, यहाँ ऑडियंस अक्रॉस द कंट्री है ना, बिहार से है? पैन इंडिया है सर. पैन इंडिया है तो आई विल नॉट बी बिहार स्पेसिफिक, बट हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे सकता हूँ. तो ये फूड प्रोसेसिंग फंड के अंदर मेगा फूड पार्क्स और जो फूड पार्क्स डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स है 313 डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स के, उसी के अंदर से ले सकते हैं. जैसे कि बिहार में उसमें 3 फूड पार्क्स आइडेंटिफाइड है एंड उसमें से सिर्फ एक ही एस्टेब्लिश हुआ है मानसी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में. मानसी में है प्रिस्टीन मेगा फूड. ये तो ह्यूज एरिया है, 100 एकर्स का लैंड है. उसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिस्टीन मेगा फूड लिमिटेड दे हैव डेवलप्ड. उसी के अंदर नाबार्ड के फूड प्रोसेसिंग फंड से उसको सपोर्ट दिया गया, अराउंड 30 करोड़ दिया गया है. एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग.
दूसरी स्टेट में भी इसी को ऐसा सपोर्ट दिया गया है। एक तो एजेंसी और कंपनी जो फूड पार्क डेवलप करते हैं उसको एफपीसी से सपोर्ट मिलता है, वो अपना कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटर वैन, डीप फ्रीजर, गोडाउन्स, साइलोस सब कुछ उसके अंदर एस्टेब्लिश किए हैं। एंड उसी के अंदर दे हैव डेवलप्ड अराउंड 40 एकर्स ऑफ लैंड जो दूसरे को आउटसोर्स कर सकते हैं। वहाँ कुछ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर एजेंसीज, अदर एंटिटीज उसी के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना यूनिट, जो जिसके अंदर एक पार्ट हो सकता है। दिस कैन बी ए पार्ट, दिस कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन दोस एरियाज। ठीक है, तो दिस इज वन स्पेशली डिजिग्नेटेड स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स where cold chain infrastructure can be established with support of this. इसमें all entities promoted by state government and government of India, the joint ventures, the special purpose vehicles, the cooperatives, the corporates, the FPOs, and some entrepreneurs, companies, they are all eligible to establish their individual processing units with cold chain infrastructure inside the designated food parks. Okay, and purpose है a wide range of activities that will result in enhancing the storage capacity and value addition of those commodities can be supported. It can be for deep freezer, it can be for refrigerator, it can be some transportation vehicles, all those things. So इसमें एक यूनिट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली कमर्शियल बैंक जो फाइनेंसिंग बैंक से थोड़ा बहुत ये लोअर रेट में रहता है, एंड ये वारी करता है अराउंड, अभी अराउंड 7.5 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड वारी करता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फूड प्रोसेसिंग फंड जो है, नाबार्ड का से 2-3 और फंड है, लेकिन वो इंडिविजुअल और इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ओनली फॉर गवर्नमेंट फंड। नाबार्ड का मैंडेट के हिसाब से, नाबार्ड का जो एक्ट है उसी के हिसाब से, एज आई टोल्ड अर्लियर, NABARD is not so far we are not allowed or we are not permitted to make direct lending to individuals. So we do it to either to banks on refinance basis, or we lend to state governments and state government entities, state government agencies to develop infrastructure. ऐसे 2-3 फंड है। एक है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। RIDF आपने सुने होंगे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, इरिगेशन, ब्रिजेस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, animal husbandry, watershed, all varieties of around 40 types of investment activities, infrastructure activities we are funding, but to state governments. State government अगर कहीं कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है किसी स्टेट में, then they can borrow under RIDF. And similar scheme है एक NIDA, NABARD इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसमें नाबार्ड का ओन सोर्स से जाता है। RIDF में we borrow from RBI and we provide that. NIDA में अपना ओन सोर्स से we provide loans. रेट ऑफ इंटरेस्ट NIDA में थोड़ा हायर है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही है, एंड RIDF में रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI का रेट से रिलेटेड है। RBI रेट प्लस 150 बेसिस पॉइंट पर हम चार्ज करते हैं। एंड अनदर है RIAS, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस स्कीम। ये एक स्पेशली डिजाइन्ड फंड है ओनली फॉर ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, यूपी का ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये 3-4 स्टेट में ये RIAS अवेलेबल है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ऑल दिस स्कीम्स। No doubt, cold storages and cold chain are very relevant nowadays because of
apt reasons. In her opening remark, Madam was telling there are huge post-harvest losses, even ranging from up to 15% in various activities, fruits, vegetables में थोड़ा ज़्यादा है, even meat and poultry industry, fish industries, उसमें भी losses 7 to 10% तक होता है. All these post-harvest losses, they reduce the income of the farmers. हमारा जो doubling of farmers' income or augmenting farmers' income programs है, various programs, इसमें this is the major hindrance. The post-harvest losses is major hindrance for enhancing the farmers' income programs. And no doubt that is one challenge. Another big challenge is no doubt India production level, farm production and horticulture and fruit vegetable production. We are among the top producers, top producing country in this world. But demand भी धीरे-धीरे बढ़ता है. हाल ही में we clapped for being the number one in most populous nation category, but it brings us a lot of challenges of food security, and इस हिसाब से हमारा food processing का जरूरी है. And state government and central government, they are having a lot of schemes. जैसे कि अंजनय जी बोल रहे थे, MIDH में कुछ सब्सिडी स्कीम्स है, and NABARD के थ्रू कुछ सब्सिडी स्कीम्स है जिसमें कोल्ड चेन को सपोर्ट दिया जाता है. अब कुछ पहले जो कोल्ड स्टोरेज जैसे सब चीज था, जो अभी MIDH के अंदर थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है. नाबार्ड के थ्रू ओनली एक एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जिसमें रूरल गोडाउन्स का सब्सिडी नाबार्ड के थ्रू चैनल है. वो नाबार्ड का अपना स्कीम नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सब्सिडी आता है नाबार्ड के थ्रू चैनलाइज होता है. नाबार्ड इज पास थ्रू एजेंसी फॉर सब्सिडी फॉर AMI, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ जगह में हमारा लाइक पंजाब में बहुत सारे वैक्सिंग यूनिट्स है. ये सब चीज में उसका एक पार्ट हो सकता है कोल्ड चेन. स्टैंड अलोन कोल्ड स्टोरेजेस AMI में भी एलिजिबल नहीं. एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एलिजिबल व्हेन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड. लास्ट ईयर उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है. स्मॉल स्टैंड अलोन कोल्ड स्टोरेजेस को उसको सब्सिडी के लिंक किया गया है. अप टू 1000 मेट्रिक टन तक उसको AMI में सब्सिडी दिया जाएगा. लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बिहार में तो एक भी प्रपोजल नहीं आया है, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज का सब्सिडी ज्यादातर MIDH में मिलता है. उनका सब्सिडी अमाउंट थोड़ा उसमें हायर भी है, एंड कुछ जगह में स्टेट गवर्नमेंट में टॉप अप्स है. तो बेसिकली नाबार्ड कोल्ड चेन को प्रमोट करता है, फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाता है. हमारा वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होता है, हाउ टू स्मॉल कोल्ड चेन के साथ उसको कैसे लिंक किया जाए. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स को उसको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है. ऑल दोस काइंड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर होता है. NABARD supports various research kind of activities through its specially designed R&D fund, research and development fund. उसमें बहुत सारे seminars and conferences जो होता है, various universities and research institute करते हैं, उसको NABARD support करता है for capacity building, for documentation. इसी के ऊपर कहीं कुछ research study और कहीं other documents prepare किया गया है तो उसको for प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन एंड डिसेमिनेशन के लिए नाबार्ड उसको ग्रांट सपोर्ट करता है. तो बेसिकली नाबार्ड क्रिएट्स सपोर्ट्स ए नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोल्ड स्टोरेजेस एंड कोल्ड चेन ऑफ वेरियस कमोडिटीज. हम अपना इन हाउस स्टडीज करते हैं, एंड वी आल्सो सपोर्ट आउटसाइड एजेंसीज टू कंडक्ट वेरियस स्टडीज अक्रॉस द कंट्री. कोई भी इंस्टीट्यूट्स एंड कोई भी कमोडिटी के ऊपर उसका कोल्ड चेन के ऊपर स्टडी किया जा सकता है. And but so far we do not have a much encouraging kind of information for farmers directly. जे हम farmers को directly कोई financial support नहीं देते. These are all basically in nutshell what I told about NABARD scheme on cold chain financing, and now it's open for the house. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for all your kind of inputs related to cold chain sector in India, and especially making it
more generic so that larger audience can also get a relation to it and can get a understanding about it. So thank you so much for your session, sir. We request you to stay here for half an hour more because we have 2 more guest speakers. After taking their kind of inputs on this webinar, then we'll open it for Q&A session, and their large audience would be happy to connect with you. So it's a request if you can stay for 2 more sessions, and then we'll open for Q&A. Oh, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now I would like to invite Mr. Kameshwara Rao from HDFC Bank. So Kameshwara ji, can you turn on your camera so that audience can see, and then we can have a discussion. Yeah, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Prashant, Sangeeta. Thanks for this wonderful opportunity for speaking to the amongst forum. I think thanks a lot, Anjenay Kumar ji and D Nayak ji. You have covered entire gamut of government schemes and all. Probably I'll touch upon some of the schemes for how we are doing it and bankers' perspective, and what we what we look at in the customers and when we're financing these long-term projects and all. So I'll just touch upon that, and then probably I'll not be detailing on the technical aspects because the technical aspect has been dealt by Anjenay ji and the D Nayak ji. So just here, I'll just share some small presentation. So we'll 1 second. Yeah, this is visible, right? Yes, it is visible, Anjenay ji. Yeah, sorry, thanks. Yeah, thanks. So just give 1 minute of brief introduction. You all might be aware HDFC Bank is the largest largest private sector bank. And we are approximately we are able to meet our 18% of agriculture loans. So we are at around 1.8 lakh crores funding the agriculture and allied entire value chain. And myself, I am Kameshwara Rao, having 18 years of experience in banking, especially in the agri background. I'm representing the rural banking group, which we take care to the entire agri value chain finance funding. This is the brief introduction about me and the bank. And yeah, I think our bank, we have spread across entire geography with more than 7,300 branches, and most probably even we are trying to connect to all the semi-urban and rural markets also. So this is about the brief introduction. Coming back, I think everyone was spoke about the need of the hour, that why we need it, and also I'll just take 1 more minute here, that what is our potential available here in terms of cold storage market and all. See, if you see Government of India, while they have during the part of Atmanirbhar Bharat, they have launched many schemes. One of such scheme is that Agri Infrastructure Fund. I'll go a little later on the detail, but if you see, the need of the hour is that 16 to 17% of food grains or the food production is being wasted because of the post-harvest losses, and we don't have enough infrastructure. If you see, we as in India, we produce more than 330 million tons in the food grains, and we have approximately 400 million tons in the F&B, food and for foods and vegetables, and approximately 4 lakh crores is worth of that fruit and vegetable production in the statistics. As per the statistics, if you say as per the statistics, the 16-17% is translating to 60-70,000 crores. So that's a huge loss. The government is trying to fix it up while encouraging the entrepreneurs in the public and private sector segments to go for this kind of the infrastructure facility, so that we can reduce the post-harvest losses, right? So if you see Indian cold storage capacity, see out of 400 million tons, in if you see 50% also would require the cold storage capacity, we have the capacity up to occupy approximately 40 million tons. And if you see the statistics as per the recent
recent statistics, approximately 8,000 cold storage facilities are there, and mostly these are covering in the potato segment, and majority of the other segments like chili or maybe the turmeric or maybe any other segment which requires the cold storage, that is not there. And yes, I talked about the 16% and the losses. Yes, that this is translating into the value. It is very high, right? And then see if you see in terms of perishable market for this one, the 1.5 to 2 lakh refer trucks to meet the perishable movements. So this is what is required. But are we having these things? Yes, we are in a process of building it up as a India, as a country as a whole. But there are many gaps which we need to fix up, right? So if you see the challenges, I think most of you know about these things, but just I'll touch upon one more minute here that, cold chain and cold storages operations, it's huge operational costs are there, 45% of expenses only goes towards the fuel cost and there is a, even the improvised technology is also not there that, using the artificial intelligence or a machine learning to operate this cold chain and all. We are still developing it. We don't have much state of art technology in implementing these things. And even if you see the power outage in especially in the rural areas, majority of the rural areas, the shortage is there, and that's a problem everywhere in India. And the expertise skill set is also sometimes it is required, especially the machines like cold storage where there is a separate skill set is required, and that is also not there. But still the courses, educational courses or employment opportunities are going towards that, but still there is a long way to go. That skill set skilled people in this segment should come. And mostly if you see as I told you, this mostly in the private sector segment, and that is also in the unorganized segment. If you see in the most of this potato cold storage and all, those are concentrated in UP or Gujarat or West Bengal and where there's production is happening. But other places, if you see, lot of the commodities require cold storage, but eventually that is leading to the losses, right? This is something on the industry-wise problems. Now I'll come to the what we actually see bank as a whole, but I mean, though I may not be a right person in terms of what we need to look at and all, but basically what we need to touch upon this, what are all the factors which are influencing this chain? If you see, there are a lot many factors involved in this cold chain, and first thing is that in the distribution, demand and supply, if it is there or not, right? That is most important thing. And whether these government policies like schemes and whether they are encouraging it or not. And there is one more thing is that how this insurance and other things are working in the eventualities of losses. Then the equipment. Now if you see the cold chain, it's an integrated cold chain. If you see if you're connecting with a storage, and the storage should go through commensurated with the refrigerated vans to transport. And if you are transporting in a refrigerated van, then definitely there should be a proper packaging material should also be there. And what kind of commodity requires what kind of package, what kind of technical aspects in storing. All these things need to be in a complete understanding of the value chain. One should have if one is getting into this kind of segment, they should at least have this kind of segment, this kind of knowledge or maybe the understanding when they are going for it, right? Having understood all these factors, yes, related experience also we are looking at. So related experience, if I say somebody is having in a trading of the fruit and vegetables, is matured enough, and then he wants to hedge certain commodity in some certain portion of time, or if he's not able to minimize the losses, so he can go for that kind of cold storage or maybe cold chain van and all. So this is what the related experience which you are talking about. We as a bank, we are looking at a minimum related experience of 3 years. Profitability, yes, profitability is also we are looking at recent financial years because this indicates how the customer is put up his industry or his entrepreneurship in what way he's profitable and also that is one thing. So second, the most important part is that the cash flows, at least the cash flows, he should have enough cash to run these meet these first year obligations. Yes, definitely if we are giving a long-term investment project,
probably a period of 7 years. And this would definitely, you have the principal and interest obligations in the year one onwards, unless until customer is requested for, moratorium, maybe a 6 months to 1 year or 2 year period. But generally, in general, 6 months to 1 year period is common. But in this period, interest will also be accumulated. So it is always advisable that, the existing cash flow should have in that way, so that, banker will have more confidence and, more likely that, your project will have a positive look. Unless until we don't have this kind of cash flows and we wanted to completely depend on the debt. Yeah, the way we, leverage our capacity to build up more and more entrepreneurs, the way banker also look at it, what is the equity. So if somebody wants to understand in a bit way that, how much we are able to contribute to the project is always important. Some initially people were asking that, is there any margin requirement and all. Yes, banker always sees the margin requirement. Some of the margins, like in some projects, government itself has, they have reduced to 10%, but in general, 10 to 25% margin with banker looks at, because it's not that, it's a general rule that in how much equities the customer is bringing in. That is what banker will look at. See, these are some of the factors. Maybe these not the exhaustive factors, but these are some of the factors bankers will look at when while doing the long-term project, especially these kind of cold storage and chain and all. What is the experience in the line of activity and all? We look at it. When we look at it, how we are financing, yes, the two eminent speakers have spoken about majority of the government schemes, and I'll also touch upon how we are also looking at these government schemes, right? So during the part of the last 2 years COVID arena, the government has launched too many very good government schemes, in the agri segment. One of that good government scheme is Agricultural Infrastructure Fund. Agricultural Infrastructure Fund is a very good scheme with government has given an outlay of 1 lakh crore. 1 lakh crore of worth of funds are being routed to the banking fraternity to encourage the post-harvest infrastructure projects and also the primary agri-processing units. Post-harvest infrastructure projects includes the cold storages, warehouses, and all these things. And primary processing units means one who is using the primary produce of rice to paddy to rice, or maybe the turmeric to turmeric powder, like that. Any industry which is using primary commodity as a raw material. So those kind of industries are being qualified. And there is one more component is precision agriculture. If somebody is using drones for the spraying, so purchase of drones are also covered. So polyhouses are covered. So there are many activities are covered. And Anjenay ji was also covering that, what are the target segment? Yes, all the target segments, including farmers, entrepreneurs, FPOs are all covered. I just like to stress upon the FPO nowadays. FPO is a kind of buzzword in the banking segment and in all the industry also. The government is encouraging FPO just to improve or uplift the economies of small and marginal farmers. Even bankers are also looking at to reach out to the FPOs because this is farmer-driven, farmer collaborated company, and this is also used for the mutual benefit of farmers and the FPO, where they can integrate certain kind of activities like backward or forward linkages, or they can supply the inputs like fertilizer and agri inputs, or they may procure the produce from farmers and sell it at a better rate from them and giving the inputs in a cheaper rate. All these benefits are there in the FPOs. So everyone is looking, and government is also supporting the FPOs in the terms of capacity building. The NABARD, Nayak ji was mentioning about these some of the schemes, and there is with the NABARD health support of NABARD has created a 500 crore limit for guaranteeing the FPO exposures, the working capital and term loan exposures, and they also have a 1,500 crore worth of funds for the capacity building of FPOs. I think you all know that your CBBOs are being helped by the NABARD or any promoting agency to give you all these
the capacity building, right from the books maintenance to the right from the setup of organization to right from the documentation perspective, all these things, even appointment of CEO, all these things are being taken up by the government. So this is the wonderful initiative taken by government. Government is looking at to formulate 10,000 FPOs by next 1.5 year, and there's a lot of considerable work is already been done. I think majority of the FPOs are formed, but there are some teething issues are there where the FPO farmers are not able to realize or maybe not able to understand the total benefits of what they can get it. If that, the capacity building or this knowledge awareness is there with the farmers, I think the FPOs will have a long way to go. So that is one thing under the AIF segment. And the AIF segment, if you see, there is one more opportunity here, that is a credit guarantee on the loans up to a limit of 2 crores. Credit guarantee is something that, once any entrepreneur who is not having any collateral, obviously bank will ask for a collateral. If we don't have a collateral, then up to 2 crores under CGT MSC guarantee, we can cover it under CGT MSC guarantee, and we can give collateral free loans. And second point, very important benefit is that interest subvention up to a 3%. Now government has stipulated a maximum cap of 9%. It means that any of the borrower, we cannot fund more than 9%. That is a maximum cap. 9% तक की हम फंड कर सकते हैं, उसमें से भी 3% का सबवेंशन मिल सकता है. मतलब नेट टू नेट कस्टमर को 6% में इंटरेस्ट मिल रहे हैं. यदि आप यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में आप कंसिडर करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग 3 more percentage interest subvention. उन कस्टमर्स के लिए 3% नेट टू नेट में उनको ये सुविधा, फाइनेंस की सुविधा मिल रहे हैं थ्रू AIF के द्वारा. तो ये AIF का एक इम्पॉर्टेंट खासियत बेनिफिट है, सो दैट वी ऑल विल लेवरेज और वी ऑल विल यूज दिस AIF scheme as a very good scheme. We have done a fantastic work in AIF scheme as a HDFC Bank. We are the number 2 bank in approving all the projects, and we have closely around 2,300 projects we have approved under this, and after the public sector bank SBI, and we are the number 2 bank, and since inception we have done so many projects under warehouse and cold storage and all. So this is 2 important benefits. One more important benefit I'll all stress upon is that we need to know about this also, that AIF is a top-up scheme. I say it is a top-up scheme. It is an interest subvention scheme. Okay. If you got Anjenay ji was talking about some subsidies in the MIDH, and the Nayak ji was just talking about AMI subsidies also. When we converge मतलब एक ही कस्टमर को 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन AIF के द्वारा मिलेगा, और इनका सब्सिडी भी मिल सकता है, या दुगना बेनिफिट है. 2 बेनिफिट इनको मिल जाएगा कि इंटरेस्ट से भी मिलेगा और कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगा. ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसिलिटी दिया है AIF के दौरान, तो ये यूटिलाइज करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट you can all leverage your capital, and your capital can be used for other expenses also. If you see, these are some of the projects where AIF can be clubbed. मतलब अभी जो NHB स्कीम्स का कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो स्कीम में कैपिटल सब्सिडी भी मिल सकता है और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल सकता है. यूपी में तो 3 और % का स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग, तो 6% का मिल सकता है. जैसा दूसरा है PMFME का एक स्कीम है. PMFME छोटा मोटा कंपनीज जो फूड ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज, जैसे स्पेशली FPO वाला कंपनीज है, जो दे वांटेड टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ द दाल मिल, और सम ऑफ द प्रोड्यूस पैडी थ्रेशर और ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट or any other unit, or they wanted to do some kind of bakery unit, or maybe there is some namkeen unit. All these units can be funded under PMFME, and this PMFME is giving 35% of subsidy up to 10 lakh limit, as this scheme envisages about primary micro food processing entrepreneur, food processing entrepreneurs. So it's a micro level, and government is giving up to 10 lakhs capital subsidy. ये जो एक स्कीम है कन्वर्ज हो सकता है AIF के द्वारा. So दोनों बेनिफिट कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है. तो these are all the schemes, some of the schemes which I want to touch upon, that government you can get the double benefit of interest subvention plus the capital subsidy.
Look, coming back to the EMI, yes, EMI, this way, though it's not a topic of today cold storages, but warehouses के लिए एक अच्छा scheme है, and cold storage to some extent, as Nayak ji was mentioning about 1000 metric ton का एक special allowance दिया हुआ है, but थोड़ा सा short capacity के लिए दिया हुआ है, but majorly covered under warehouse production, and there we can get subsidy up to 25 to 33%. ये जो इनके लिए जो कस्टमर को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है एंड बैंक को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ता है, तो ये एक प्रोसेस है. विन इन डिटेल विल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम will not be able to cover entire details how to apply and all, but I'll just if at all if somebody is required on request we can do it. MIDH I think in detail Anjenay ji has covered. I'm not covering it, but yes, there is a double benefit, interest subvention plus this capital subsidy up to 35% to 50% in the hilly areas for all the beneficiaries we can get in various purposes of this project, right? And some of the schemes, because we are all there in the agri segment and everyone, so I wanted to touch upon these schemes as well. So agri infrastructure fund, I covered you the 3 benefits. Please use the 3 benefit. One is that credit guarantee, and second is interest subvention. Third is that this scheme can be converged with any other scheme. Fourth one is that customer can establish 15 more projects, 15 projects in different places, different pin codes. So he can get 15 up to 15 projects provided his cash flow supports. So this is what agri infrastructure fund is there, and this is there till next 5 years 2026 तक है. तो use कर लीजिए ये scheme का benefits leverage करने के लिए. Stand Up India scheme is one scheme. This is really a good scheme for weaker sections as well as women. And they are encouraging all the entrepreneurs, new entrepreneurs up to 100 lakhs इसको loan दे सकते हैं. PMFME I covered. Farmer producer organization is definitely up to 200 lakhs. क्रेडिट गारंटी के दौरान हमको वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन मिलेगा. ये भी एक नाबार्ड से ही नाबार्ड के द्वारा नहीं दे रहे कि नाब संरक्षण करके एक ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट से ये सुविधा दिया जा रहा है. एंड CGTMSE ऑल्सो वी कैन कवर अंडर द credit guarantee. And CGTMSE credit guarantee, you all know that this is the government coverage now increased from 2 crores to 5 crores. It's a wonderful opportunity who wants to avail this CGTMSE guarantee. Then this can also be clubbed in the AIF part also, right? Up to 2 crores. These are some of the schemes I would like to touch upon, right? Mr. Kameshwar. So this, yeah. I think we already ran. Yeah. So that I'm done with my this one. So this is the end of my this one. So we can go ahead. Yeah. Thanks a lot. First of all, thank you so much, Mr. Kameshwara Rao, because for presenting all this information so excellently in one kind of slide. It is really excellent, and it is really informative for all the audience. It will definitely add value to people. I mean, hats off to you for making this great presentation. Now, I would like to invite Mr. Rohit Dhanda from Samunnati Finance. So, Rohit, can you turn on your camera? Okay, here we have. Hi, Mr. Rohit. I just did. Hi. So, Good morning. Please go Good ahead morning. with your presentation. I don't see the share button functioning on my screen. So can you please enable that, Okay. please? Yeah. Bhairav sir, can you enable share screen for Mr. Rohit Dhanda? Just a second. Now do you have access? Yes, I do. I'll just start sharing my screen, and please let me know when the screen is visible. Yeah, we can see your screen. Yeah. Okay. Thank you very much for having me on this webinar. I think the points presented by the eminent speakers so far have been absolutely useful and insightful to share some of the details about what is going on in terms of financing the cold chain solutions in India. And I think from a agri perspective, this is one of the very important areas that we should be looking at. I'll prepare my conversation in slightly different manner, because
while Samunnati is a financial institution, we are a non-bank. So and our focus is also not on the asset financing per se, but looking at the working capital solution. So let me give a little bit of a background to Samunnati. Samunnati exists for two reasons. A, how we make the markets work for smallholder farmers. And the reason for that is, if you look at the India's agriculture landscape, most of the smallholder farmers in our country remain on the receiving end of the market dynamics. So farmers end up usually being on the unfair side of market practices, and that means they usually do not have a fair access to not only the market solutions but also the other solutions that are built in our ecosystem. I think the government has done some wonderful work to make the products accessible to smallholder farmers in a country, but the idea at Samunnati is how do we make market work for the farmers, not the the in current situation where markets are working off the farmers, right? And the other idea from our side is that how do we make the agri value chains operate at higher equilibrium? And the reason I make that statement is no matter which value chain do we pick up, cold chain value chains operations in today's conversation, but no matter which value chain do you pick, there are inherited inefficiencies in the system. So how do you remove the inefficiencies? How do you streamline the processes so that the entire value chain starts operating at higher equilibrium, which increases the throughput and benefits the farmer is an idea that Samunnati works with. Very quickly, a few numbers. We are about 8.5-year-old organization. We still call ourselves a startup in that sense. We are present in 22 states. We have done close to 14,000 crores worth of gross transactions since our inception. We work in about 70 different agri value chains, and we work across the value chain, where one side, the supply side, is dominated by the farmer collectives, where we have about 3,000 plus farmer collectives that are engaged with Samunnati. On the other side, if you look, we are working on the agri enterprises, and we have about 3,500 agri enterprises representing the demand side of the value chain. We have heard about many of these solutions specifically on asset financing in the cold chains. And like I said, because our solutions are more geared toward working capital, I'll focus on that piece. So our financial product beneficiaries can be any of the five that I have shared on the screen. So they can be agri enterprises, they can be the farmer producer organization. And when I say farmer producer organization, I'm putting that term very loosely. So any medium where the smallholder farmers are collectivizing their efforts for solving certain problems, we call them as a part of our FPO vertical. So they can be FPCs, they can be informal producer groups, so on and so forth. The other side of this is if there are any NGOs and federation representing the farmers. So your Guj Pros and other, Madhya Bharat and any of these federation that you can pick to represent the farmer producer companies and the smallholder farmers, they are also one of the beneficiaries of our product. The two other piece of this is, one is village level entrepreneurs, which are independent entrepreneurs that are present in the rural areas, and they are working in agri value chains, and they are requiring some sort of financial solution. And the fifth piece of this is the agri startups. And I think while the commercial banks in our country are doing absolutely wonderful work to support the value chains in more traditional manner, the agri startups, they also play a very important role, because these startups are bringing up new ideas, new solutions, new innovations to solve some of the inefficiencies of our agricultural operations. Like I said, I mean, we have 5 or 6 different products as part of our solution offerings. We are not a product company per se, we are a solution company. So anything to do with your receivable finance, anything to do with your short-term or medium-term loan, which can be ranging from 6 months to 18 months for that matter. It can also be some specific equipment finance, which is small piece of our portfolio.
It can also be something to do with the market linkage, which is super important because it is easy to remove some of the bottlenecks on the production side, but market linkages and realizing a better price is what makes the farmer attracted to certain value chains in our country. And last but not least, the working capital, that is the core area of competence for an organization like Samunnati. So I'll not take too much time to explain, what we are doing in the cold chains, value chains and financing. One piece where we are looking at is the climate smart agriculture and climate resilience. And when we realize the landscape of our CSA portfolio, there are many new companies that are coming up which are deploying what we call decentralized renewable energy solutions. And a few names that you can see on your screen, they can be Prometheans of the country, Ecozens of the country, Rucart, New Leaf Dynamics, a few of them that I have mentioned here. And one use case as an example that I would like to highlight to make the audience clear about it is, let's say, Samunnati works with any of these companies where the companies can identify in their geographies certain village level entrepreneurs, and they recommend these entrepreneurs to Samunnati, and Samunnati provides the financial support. In many cases, these village level entrepreneurs, while they have access to multiple government schemes and subsidies and benefits that some of the eminent speakers have talked about, their key problem remains the working capital and installation of some of the equipment they would need to start and run their operation. So Samunnati chips in at that point to provide them the financial support, where the equipment manufacturer, the OEM, in case example I'm talking about Promethean, they install what is a milk chilling unit. I'm talking about the dairy value chain here. So in this example, let's say the village level entrepreneur is active in dairy value chain and they are in requirement of a milk chilling unit. We would be supporting these village level entrepreneur to not only install the chilling unit through the OEMs, but then also ensure that the company that also has some buyback arrangement for the end producer, the milk in this case, so that they can get the milk collected and pay off the village level entrepreneur. And in that case, we make an arrangement how the loan for the chilling unit that can be paid off through that activity. So in that sense, we are not underwriting the equipment or underwriting the collateral per se that the village level entrepreneur has to offer, but we are underwriting the transaction. So village level entrepreneur needs to get the chilling unit. He's using it for certain purpose. We underwrite that purpose, and that ensures the cash flow catchment of the entire transaction. These innovative solutions are important to not only make sure that these new age cold chain solutions, they are deployed at the ground level, but the scalability of such deployment also increases with this piece. I would want to take this as an opportunity to all the audience to hear me out, and we are more than happy to understand from you how we can work together. Thank you very much. Yeah, thank you, Mr. Rohit Dhanda, for this presentation and for sharing all the kind of activity which Samunnati is doing to encourage DRE-based solutions. It is really great. Now I would like to request audience to raise their hand if they have any question for Mr. Kameshwara from HDFC Bank, from Mr. D Nayak, NABARD, and from Mr. Rohit Dhanda, Samunnati. So I'll be unmuting Mr. Ankush Sharma so that he can ask a question. He can go first, but others can also raise their hand. So yeah, Mr. Ankush, you can go ahead and unmute yourself. Thanks a lot, everyone, and special thanks to all the three presenters. I think all the presentations were very, very informative. I personally work as investments and financing advisor, and I'm part of the AEEE team. So I had 2-3 questions, one more focused on NABARD. Thanks a lot, sir, for your whole presentation. I think what NABARD is doing in the sector is really, really transformative. And NABARD being an accredited entity for green climate financing also. And cold chain has a direct correlation, which also opens up a whole potential of climate financing coming into the sector as well. So my first question is on the warehouse infrastructure fund.
So, sir, is that fund, I mean, while going through the details of the operational guidelines of warehouse infrastructure fund, there is some eligible infrastructure related to cold chains. And is that financing available directly to private sector, or it is also an institutional lending? So that's my first question. Thanks, Ankur. As I told in my deliberation, NABARD has got certain ad hoc or purpose-specific funds. This warehouse infrastructure development fund is also AAF. Is also one such specific purpose fund. It is basically given to development of warehouses, both wet and cold, dry and cold. But this is again directed to state government or public sector infrastructure development. Wherever the state governments under their agri-marketing or development or agri-marketing promotional initiatives, they have their regulated markets, and they are trying to develop that regulated markets, and they try to develop that storage facilities for public procurement, food grains and other things that they have available fund. This small kitty was given, and the kitty is currently exhausted, and we have not yet got any top up from this fund. This fund is rightly not available. But again, this was meant for creation of warehouse infrastructure in public state governments. And Thanks a lot, sir. So just one small question to you on the GCF financing. So it's an accredited agency. NABARD is an accredited agency. Are you also thinking on setting up some climate financing or climate fund to support cold chain infrastructure, or that's not currently in the discussions? So basically, wherever you can avail more concessional financing from Green Climate Fund. Green Climate Fund is also a special purpose fund. We get it to some 2-3 sponsors. One is our India AIF is there, and the Green Climate Fund, the international fund, what we get support. That is also mostly directed to public sector channels only. State governments and state government agencies, they can do. Suitable windows are open for suitable entrepreneurs, but so far we have not yet considered. But I will refer, if you have any query, mail it to me. I will refer to the concerned department. They can guide you well how to establish any infrastructure in climate support. Okay, thanks a lot, sir. So now my second question is to Mr. Narayan who gave a very nice presentation from HDFC. Sir, from a banking perspective, can you throw more light on the whole lack of bankability? Because currently all the grants are coming, they are coming more equipment specific grants. At times, the market price is very high from MIDH pricing. So how do you see bankability of cold chain infrastructure? Because it is an asset class in itself. So how do you see this to the whole bankability issue to be resolved even after all these subsidies are collated? I think the equity partner contribution is also a big constraint. So I wanted to ask you a question more focused on whether project financing, SPV based financing or revenue based financing for cold chain infrastructure, do you see a potential of these such mature lending happening in cold chain sector soon? Or do we need still a lot of work on project preparation, risk mitigation, and overall life cycle financial modeling before we can come to such mature financial lending? Over to you, sir. Mr. Kameshwar? Yeah. Okay. Yeah. So thanks for asking that. See,
Firstly, that as I told you, so these are all subsidies which we are trying to align with the government, right? The government has made some specifications. So if you ask me, AIF and other schemes where they're giving subventions and all. Obviously, when we go for the initial period of your loans, definitely there will be crunch for the working capital, that there will be crunch for the financial needs, right? So the interest subvention is always being helpful. At the same time, what they are asking, they have, they are also, all these agencies, all the government teams, like through their separate ministries, like, a Department of Agriculture for the AIF, Department MOFP, Minister of Food Processing Industry for the PMFMU, all these people, they have stipulated with some guidelines that, what kind of project they, even MIDH for that matter, they have stipulated some guidelines. So in that guidelines, they are asking for the minimum equity quantity of 10%. Though you're referring about grant and all, yes, the grant may be, incorporated, provided if it is not, if they're not, they would not like to withdraw on any conditions or something, that may be converted into equity for a long, if it is there for longer period of, then it is can be converted into equity, right? So and if you look at any, so there is one more thing. If you see comparable with the way we assess the finance, in general, I'm saying not particular to any other thing. When we go for a small and micro units, definitely the plan, the detailed project report, these are all everything needed. And probably if you go for a multi companies projects, like, build to operate model and all these things, definitely those are there are different methods of assessment. As you rightly said, the revenue assessment method, all these things will be there, where, the big companies, where based on their the sovereign ratings and then their external ratings and all these things, that's a different model of assessment. Now what we're looking at is kind of a medium to small entrepreneurs, which will require around approximately 10-15 crores and all, where we need that detailed kind of visibility in DPR. Even the bankers are also, the government institutes are also asking while they are preparing it. If there is a scheme called in MOFP, also there is a scheme for the cold chain infrastructure. They're asking a detailed pro forma of details that, how the next 5 years, what is the revenues and all. And if they are satisfied with that, even bank, if they're also relying on, even Anjenay ji was mentioning, 20% of the project cost should be financed by the bank. So they're also stipulating in that way. So I just want to clear that, one point is that it depends on the project to project. Yes, small and medium projects definitely require this kind of thorough analysis. I do not make much time, but this will require a kind of DPR and the means of finance, and then the projected financials and all. That's what I think, you got my answer. Yeah, thank you, Mr. Ankush, for asking those questions, and thank you to again Mr. Kameshwar for answering those questions. Thank you to Mr. D Nayak for addressing the queries from Mr. Ankush Sharma. Now I am unmuting Mr. Nand Purohit. Mr. Nand Purohit, you can unmute yourself and ask your query. You have raised your hand. Hi, Devi Prasad Nadpurohit here. So I'm representing Carrier Refrigeration. So first of all, thanks to AEEE for bringing investors, the financial institutions, and manufacturers in a common platform. So and thanks to all the presenters who have presented it in detail. So my question is, like, we as a turnkey contractors and manufacturer of refrigeration units of global standard and having executed the number of cold storages across the globe and India as well. So is there any possibility to associate with the financial institutions or amalgamation where we can help the customers to give us the proper solutions from the beginning itself? So is there any possibility with the financial institutions wherein if anybody approaches you and we get information on that, is there any possibility? I think the other way which will work out, probably Nathuraji. Where are you based at, sir? I'm from like Bangalore, sir. Bangalore. Okay.
Yeah. So you can just touch base me that I have given you email ID. Probably see other way will be working out because see it depends, if customers as a bank a whole even in that matter financial institutions, we are not supposed to divulge the customer informations. Hope you understand that. Yes. But on the other way, if you go approach a customer and he's looking for finance, then definitely you can refer it to us, and then probably based on the merits and demerits of these things, then the case can be taken in a financial way. So that we can look at it, right? Yeah. Thanks, sir. Thanks for your Yeah, answer. thanks. Yeah, thank you, Mr. Nat Purohit. Now I'm unmuting Mr. Asim Roy. So, yeah, Mr. Asim, you can unmute yourself and go ahead with your question. Thank you so much. The presentations were really very informative and very relevant to the current schematic lending programs that are much required for the cold storage sector. My name is Ashim Roy. I'm the program lead for energy finance with World Resource Institute, India. I have a small query. Maybe Mr. Nayak can address it. Now, MIDH has in their recent communication that say that this cold storage can be built using alternative energy constituting PV system, solar thermal system, or any non-conventional sources of energy. And there is a provision of, getting 100% of the cost on invoice value. Is there any program under NABARD? Similar kind of initiative has been taken to promote cold storage that has been run on, non-conventional energy sources, including solar and renewable energy sources. So is there any schematic lending which also promotes, running of this? And Mr. Nageswara also mentioned that the operating cost of this cold storage are pretty high most of the time because of electricity not being very regular. They have to run on diesel and other alternative sources of energy. So I think, Mr. Asim, that Mr. D Nayak has dropped off from the call. So can any other guest speaker address the query which is raised by Mr. Asim? Mr. Rohit, do you want to address this query? Because I think you are into renewable energy based solution and you have funded some of the projects like that. So we have Asim, can you just repeat the question once again? And of course, I can give Samunnati's perspective. However, because we have not done project finance per se, because project finance and renewable energy a very different domain. But I'll try to answer from best of my knowledge. I'll repeat my question. Actually, what even the MIDH under the mission for National Cold Storage Center, they've came up with certain guidelines where they've said that this cold storage will be encouraged to run on alternative source of energy, which includes renewable energy. Correct. And they will give 100% subsidy on various components that are used for making this cold storage run on solar energy, maybe solar panels, solar thermal, and other installations. I was looking at in case of any financial service providers giving some kind of loans to solar-based cold storage units, or maybe renewable energy or alternative source-based cold storage energy, system. Understood. I think your question is more directed to the financial institutions that would want to take that particular sub segment of cold solutions and storage along with the borrowers. See, I think it also depends on what are the guidelines in terms of financing such a facility, and what the financial institutions experience has been when they have worked on similar subsidy driven, back-end subsidy driven, or any other intervention driven models. My limited experience there comes from the irrigation sector, where micro irrigation has been successful in some of these states, and some of these states the back-end subsidy realization from the government has been a big challenge.
for financial institutions. Like I said, I mean, from Samunnati's perspective, we have not looked on any of these programs because the solution that we provide are more decentralized in nature. They are available at an individual small FPO level or even at the individual borrower level. And in most of these cases, there are no subsidy interventions that are available. So the price parity, if I can put it the other way around, it simply depends on the borrower's appetite and their vision of how do they want to incorporate such technologies in their day-to-day operations. One example of this would be, and the reason I'm talking about the cost parity, one example of this would be, let's say, a regular refrigerator versus a solar powered cooler or chiller. Okay. This clear differentiation between the pricing would be at least 3 to 4 times between the renewable energy powered equipment versus the regular electricity powered equipment, right? A regular refrigerator you can buy anywhere between 25 to 30,000 rupees. A renewable energy powered refrigerator would be somewhere between 1 to 1.2 lakh rupees. So it's one way to look at, whether it is even worth that much of a premium. But that's the idea, that some of these renewable energy solutions, they are at very infancy level. And till the time somebody comes and picks that up as a first lead or the first mover, these solutions are not going to penetrate at a high level. And the cost basically boils down to your scalability. So as and when these solutions, they start penetrating into the user segment, you will start realizing the cost of these equipment that will start coming down. So there would be only a handful of example where the cost parities today would be even in the same ballpark of what the conventional solutions are. And that is one important area most of the financial institutions would definitely want to look at, because till the time they don't see any scalability of it on, or even any vision of deploying such solutions at a mass level, I don't think there are going to be many financial institutions that will pick that up. I hope that answers your question, Asim. Thank you so much for the response. Do I have the privilege of asking another questions? Is it possible? It's a request, Mr. Asim, that if we can ask other people also. Okay, So no issues. No if issues. it is okay, Yeah. you can mail us your questions. We'll definitely revert on your mail. Yeah. I have already put these questions in my chat box. I would, in case you can reach out to some of the panelists and answer, that would be really great. Thank you so much. Thank you, Mr. Asim. So now, because as we are going to reach to the end of this webinar, I request if there is any other participant who wants to ask question, please raise your hand so that we can unmute you. So it's the last question. So anybody who wants to ask any question, please raise your hand. Mr. Nad Purohit, do you have any other question? Because I see your hand is raised. I guess not. So yeah, Mr. Asim, I think because there are no other participants to ask question, you can go ahead with your question. Yeah, what we have, realized, this is a general question, so anybody within the panel can answer, including, Mr. Kameshwara Rao from the HDFC Bank also. We have realized, with I being also a banker at one point of time, I realized that, most of the schematic lending programs or say bank lending programs targeting at cold storage, there is always a lack of awareness both at farmers level or at the farmer producer level or at the aggregator level about their eligibility, loan amount, subsidy, how it will be credited over a period of time, what is the equity contributions. So what are the mechanisms? So for example, if somebody would like to apply for a cold storage and approach an HDFC bank, in the branch level, will there be any specific departments or any specific team which handles it, so that the information is readily available? Is there any national level initiative being done
to disseminate more of these informations at a larger level, all the schematic lending programs, what are the eligibility, what are the benefits of it? Yeah, thanks, Ashim. Thanks a lot referring this question. So, first of all, I think you have worked in a banking sector. Probably in any other, I mean, I'll also give you a generic answer from, banking fraternity. So you might know that, banking and the PSU banks, they work in a culture that, branch manager would know everything. He has some sanctioning powers and all. So probably they will have all the information in the PSU banks at the branch manager level, right? If we are going to a private sector bank, if you go to a manager, a branch manager, if you think that he should know entire thing, so you might be, in a wrong this one judgment that branch managers in private sector, most private sector banks work in the liability kind of the current account, savings account, and the liability part of business. And there are specialized experts which are sitting at the branch level, probably in 1-2 branches, one relationship manager. They will address all these segments of MSMEs. Probably you're asking for this question of 75 lakhs of hypothecation. We do have the hypothecation, the ENWR finance also. So these are all information is available at the branch level. There are specific relationship managers. We need to ask them that who is looking after this warehouse finance, probably who is looking after this cold storage finance, who is the agricultural finance relationship manager, so that they will be able to guide you to a proper person if they are unable to do it, or otherwise they will only take it up further. So this is what I wanted to tell you. Is that answers my question? Yeah. Thanks, Vedant. Because normally what happens, sometimes the entity may also look for a warehouse receive finance. Correct. Yes, in addition to yes. a cold storage facility. Obviously. So this we are also one of the big bank in putting up the latest innovation methods of financing in the warehouse receipt finance. Also, some other colleagues of us are handling it, and we also released with some app also that end to end the digital disbursements happen in certain terms and conditions applying some kind of segments only, and some kind of segments we also financing the normal warehouse financing also. So if you need more further information, yes, you can reach out and I can connect you with the right persons, and then we can have offline discussions. Thank you so much. So thank you so much, Mr. Kameshwara Rao. Thank you, Asim, for having such discussion on cold chain kind of financing schemes. So as now we have reached to the timeline of 12:30, I would like to conclude this webinar, and I would like to thank all the guest speakers, Mr. Kameshwara Rao from HDFC Bank, VD Rao from NABARD, Mr. Anjenay Kumar from representing Department of Horticulture, and Mr. Rohit Dhanda from Samunnati Finance. So for sharing all the key valuable insights where people do want to know about this subsidy and scheme, and if you see there are challenges at grassroots level which can be addressed after having such discussions at open forum. And I would like to thank all the audience for kind of putting such valuable questions, making this discussion more important. So thank you so much to everyone for attending this session. And before passing on to Sangeeta ma'am, I would request that stay tuned for our webinar, because we are trying to make it in a very sequential way, where we initially did first webinar on post-harvest management, second was on bank and financing, which is right now which we are having, and third will be conducting on schemes from APEDA and Horticulture, National Horticulture Board, to promote kind of export in horticulture produce with help of cold chain. So stay tuned for our webinar, third webinar, and over to you, Sangeeta ma'am, to share your concluding remarks. Thank you. I do not have much more to add. Again, thank you very much, Mr. Kameshwara Rao and Mr. Rohit Dhanda, and I think Mr. Anjenay and Dr. D Nayak have dropped, but I thank them. I was very interested to note that a lot of people did ask about sustainably powered cold chain. So very happy to see that. Yes, there are challenges. Just a reminder that our program at AAA on cold chain is really to promote and advance sustainable cold chain.
to work through those challenges. And that is why, as Prashant said, we first had an awareness session on post-harvest management and cold chain systems and technologies that are available. That was about a month ago. Today's was on financing. And I request you all to please stay tuned for our remaining webinar also in the series, which is around value chain and value addition using cold chain and how cold chain can really add value also while still being sustainable. So please do stay tuned for our mails on the next webinar. Thank you very much. Thank you so much. Have a good day to all. Thanks a Bye. lot. Yeah, thanks. Thank you. Thank you.